अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा एंड हर एक पेरेंट का ये होगा शायद क्वेश्चन कि इज एस्थमा कंप्लीटली क्यूरेबल? Okay. So they all ask. 10 out of यस 10 they say कि ओके मैम हमने वी एक्सेप्ट दैट इट्स एस्थमा, अंडर 5 को मैंने क्यों बता दिया, ओवर 5 को मैंने स्पायरोमेट्री टेस्ट से कंफर्म करके बता दिया, जिससे हम डायग्नोसिस एक्सेप्ट करके हम ट्रीटमेंट पर आप क्योर तो कर देंगी ना. सो देन माय ट्रूथफुल आंसर टू देम इज दैट the right term is that I will control it completely, which is as good as cure. Because आज आप किससे आते हैं that your child has symptoms again and again, कि ये बच्चा स्कूल मिस होता है, ये बच्चा या खेल नहीं पाता, ये बच्चा आइसक्रीम खाता है तो उसको तकलीफ हो जाता है, ये बच्चा तो I will give your child an absolutely near normal life, but I am not going to lie and say that I will cure it because इसकी एयरवे ऐसे है, मैं इसकी एयरवे ऐसे नहीं कर सकती. जब ट्रीटमेंट भी करेंगे ऐसे खुल जाएगा एयरवे, पर एक पतला रेड लाइन रह जाएगा. Okay, so that is why the terminology is not ऐसे रहेगा क्या? No. Are you seeing? So thick is the redness. Finally, it will be like a pencil thin one red line. That is ओके why I am telling you truthfully that it's a because आपने cure शब्द use किया, इसीलिए मैं बोल रही I won't use the word cure. I will use the word that I can control it as well as 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 it will feel that it's cured. तो इस टाइम हमें बहुत पूछते हैं कि मैम पर होम्योपैथी या आयुर्वेद या फिश थेरेपी उसमें तो क्योर है, तो फिर एक जमाने में, अभी तो मैं पिछले हफ्ते 63 इयर्स की हो गई, पर जब मैं यंग थी, 30 इयर्स बैक, पहले की बात, आई एम डूइंग एस्थमा फॉर डेडिकेटेड एस्थमा फॉर नियरली 30 इयर्स. सो तब मेरे को थोड़ा गुस्सा आता था कि देखो मैंने इतना ट्रेनिंग लिया इन द बेस्ट सेंटर इन यूके, एंड my boy who is son who is 37, he used to be a real bad asthmatic. तब मैं फौज में थी, and so it used to be very awkward because like I that I have to go on a night duty or I have to go on a duty with troops, and वो ठीक नहीं है, but I went because a soldier is first a soldier and then a mother, right? But the thing is, वो मेरे को खा जाता था, that God, I can't help him. And that time in our country we also didn't have much facility, so मेरे को opportunity मिला to go overseas and I trained की मैं, तो मेरे को तब लगता था कि भाई इतना कुछ समझाने के बाद ये मुझे पूछते हैं. अभी उम्र के साथ साथ विजडम भी आ जाता है. अभी मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती ऐसे कि देखो वो पैथी में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ अपने पैथी के बारे में बात कर सकती हूँ. अगर आपको उस पैथी से करना है तो आप ऐसे क्यों ना आप पहले कर लो और फिर आ जाना. फिर अक्सर वो बोलते हैं कि नो मैम हम कर चुके हैं, या बोलते हैं जैसे कल ही मेरे को एक मम्मी के साथ हुआ कि हम आपके इस ट्रीटमेंट के साथ-साथ कर सकते हैं क्या? फिर मैं मानती नहीं हूँ. ऐसे फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किससे लाभ हुआ? इससे लाभ हुआ या उससे लाभ हुआ? तो आप अगर मेरे पास आई हैं दिखाने के लिए, तो आपकी मर्ज़ी, पर आप मिक्स मत कीजिए बिकॉज़ यू वोंट नो. सो आप कर लो ये, और अगर आपका बच्चा तो भी नहीं ठीक होता, then you can decide, but they all get well if they follow what we tell. I am so sure-footed about what we are doing, and that is why with a workshop called Casper, which is with the chest research and training in Pune, and with the asthma training module, which is the national respiratory chapter of the Indian Academy of Pediatrics, हम इस देश के कोने-कोने जाते हैं टू ट्रेन पीडियाट्रिशियन, ताकि सबकी सोच समझ हो, ताकि सब राइट बच्चों को सिमिलर ट्रीटमेंट मिले.
नहीं तो Right. एक पेरेंट देकर और एक पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा और वो कुछ और बोलेंगे, Yeah. not because of lack of knowledge more than anything. Yeah. Then who is deprived of the correct treatment? The Correct. child, right? Child. So every child has a right to correct asthma treatment, because I feel it's not rocket science. But you can turn around the life of a child, and you can turn around the life of a family with an asthmatic child. Absolutely. So we need to do it correct. And thank you for being so honest कि 100% नहीं but 99% तो मतलब which is a good enough percentage कि एक child एक near normal life जी सकता है. And Absolutely. yeah, और मेरा next question आपसे ऐसा होगा कि the second part कि क्या ये relapse हो सकता है? Uh, yeah, so or the child has to continue this treatment, I mean, for a very long time in his life, his or her So, life. yeah. So you did ask me a question for how long cure के बाद. Now this is also something that all parents say. Yeah, yeah. So जो अंडर 5 वीक्स रहते हैं, हम उन्हें ट्रायल ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 3 मंथ्स के लिए देख के बंद करके फिर देखते हैं, अनलेस एंड अनटिल they have a very strong family history, they have other allergic markers, or they have come to me in a flare up, फिर तो इनका भी ट्रीटमेंट 1 साल के आगे जाता है. So most children need controller therapy for anything between 1 to 1.5 years. There are children in my clinic who have received it for 7, 8 years and they are still on it. And these are the ones who are really difficult asthmatics, or they present it very early in life, or both their parents have asthma, or these are the children who also have an eczema and skin. These are the children who might take it for a longer time. The ones who present very early, or the ones who present in their teens, the ones who have both parents who are asthmatics, the ones who have atopic skin, eczema of the skin, that. Means So, what? Means what, doctor? Sorry to cut you. What is eczematic it is skin? How does it look? that is dry skin, और ड्राई और ऐसे स्किन फोल्स में आते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है, नी के पीछे होता है. एंड ये कभी कभी बहुत, जब ये बिल्कुल इन्फेंट रहते हैं, एंड the cheeks are very dry, and if I'm seeing the old prescription and a doctor has prescribed skin emollients और स्किन स्टीरॉयडल क्रीम, तो ये मेरे को बताता है कि इस बच्चे में तब से शुरू हो गई थी द एटोपी, जिसको बोलते एटोपिक मार्च, कि इसको तब से ही ये एलर्जी की शुरुआत हो गई थी. एंड शायद तब डिटेल्स में हिस्ट्री नहीं लिया गया था, या तो हम तभी उनको चौकन्ने कर देते कि इसको ऐसे हो सकता है. एंड सो व्हेन एट 1.5 2 years, जो see, I would say 80% of the asthmatics की inhalers हम 1.5 से 2 साल में बंद कर देते हैं. That's a very large number. Okay, there may be 20% who need it much longer, and उनको हम पहले से ही, and I tell them this, that जैसे ट्रीटमेंट चालू रहेगा, जब हम स्टेप डाउन, जैसे मैंने 202 टाइम्स पे शुरू किया, तो यही ऐसे ही नहीं चलते रहता. When the child is better, हम उसको स्टेप डाउन करते हैं. अगर ये लड़खड़ा रहा है तो उसको स्टेप अप करते हैं. तो स्टेप डाउन करते करते एक टाइम आता है जब वो सिर्फ रात को एक बार वो पफ लेता है. फिर हम बोलते हैं कि देखो अभी बरसात का टाइम है, इसके बाद दिवाली का पोल्यूशन होगा, तो हम अभी नहीं स्टेप बंद करेंगे, तो उसके बाद बंद करके देखेंगे. जब मैं बंद करती हूँ तब मैं उनको बोलती हूँ, सी when you are an asthmatic, ये टेंडेंसी लाइफ लॉन्ग रहता है. There are more than 50% चांस that इसको कभी भी और इनहेलर की जरूरत शायद ना पड़े. But there is a 50% chance that this child might need inhaler again. वो अगले महीने भी हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है. But you should know that this child has asthma, so that when this child becomes a young adult, you should inform to him or her that you suffered with asthma
सो दैट सोचो एक 30 साल का यंग एडल्ट सर्दी खांसी हो जा रहा है, चीख रहा है, हाँ, खांस रहा है, उसको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दे जा रहे हैं और किस्म की दवाइयां दे रहे, बट एक्चुअली हिज एस्थमा इज अगेन अपना सर निकाल रहा है. All that he needs is diagnosis and appropriate treatment, and he is back to being fit and going to his work and getting about his life, right? राइट. ओके, थैंक यू फॉर दैट. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है शायद, बट आई थॉट ऑफ आस्किंग, इफ अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ अस्थमा और वो इनहेलर या कंट्रोलर यूज कर रहा है एंड ही फॉरगेट्स समडे, कहीं पे अगर बाहर गए हैं और उन्होंने वो डिवाइस यूज करना लेके जाना भूल गए एंड द चाइल्ड गेट्स दैट अटैक, is there any temporary solution or points that he can rub or do something about it? Is there anything like that? He has to. If an asthmatic has a flare up, his only treatment is bronchodilator in the inhaled route, and sometimes they might even need an oral steroid tablet, which the doctor will see and give. Oh, Any place in the country, the doctors will definitely have, if nothing, they will have nebulizers. So हाँ, at that point of time, this child will probably need a bronchodilator. If there is desaturation, will get an oxygen. अगर an asthmatic जो controller medication लेना भूल गया है और उसको flare up होता है, कोई भी मलहम दवा इससे कुछ नहीं ठीक होने वाला. His हम्म, airways to open. They need to bronchodilate. He is at the threat of getting into a respiratory distress. He can die too. Even mild asthmatics can die. Asthma is a janleva bimari. So they should rush to the hospital. Tell the doctor there honestly, the doctor, my child is asthma. मैं inhaler देना भूल गई और ऐसे हो गया. So they are not wasting time. They know yeah, immediately कि इसको ऑक्सीजन या और ब्रोंकोडाइलेटर देना है. तब वो हिस्ट्री लेते नहीं बैठेंगे. Opening sentence should be that he's an asthmatic and not getting. So I always tell my parents, this is called the asthma action plan, that you must never forget your controller inhaler. छुट्टी हम्म, पे भी जा रही हो तो आप लेते जाना. I asked the mother कि आप अपना बिंदी लेके जाना भूल जाती है क्या? नहीं ना. सो आप वैसे ही अपना, जैसे आप अपना श्रृंगार नहीं भूलते या आपके हस्बैंड अपना वॉलेट नहीं भूलते, और इवन रिवर्स, वर्किंग मदर लाइक यू डोंट फॉरगेट योर वॉलेट विद द क्रेडिट कार्ड्स एंड योर Aadhaar and photo ID for a hotel check-in. Similarly, at that time, remember, I need to put in the inhalers. It can be janleva. It can be, some might think, oh my God, she's scared, but I rather scare than have a yeah, catastrophe in my yes, hands. yes, Okay? I agree, yes, I completely agree. एंड कभी कभी ये लोग बोलते हैं मुझे कि हम शादी में जा रहे मैम, तो थोड़ा शर्म लगेगा सबके सामने ये देने में, एंड ऐसे कोई शर्म नहीं है. You know, you should use your experience about the disease to spread it in the community. Yeah, तो जिस तरह आपकी कोई गलती या आपकी बच्ची की कोई गलती, you know, और आपको कमरे से अभी नहीं 20 साल पहले की बात है कि एक मैं फैमिली को देखती थी जिसके 3 भाई के बच्चों को देखती थी, और हर भाई की बहू मेरे को बोलती थी कि मैम मेरी देवरानी को मत बताना कि मेरे बच्चे को दमा है, और वही देवरानी बोलती थी कि मैम मेरे इसको बताना, हम इनहेलर उसको ना बेडरूम में ही देते हैं. और just see, like you know, and एक बार वो फ्लेयर अप पे आ गया एक, एंड बताया तो उनको बहुत बुरा लगा कि आपने बता क्यों दिया. सो आई सेड कि अच्छा रहता क्या कि अगर आईसीयू में एडमिट हो जाता तो, बट यू सी अवेयरनेस स्प्रेड करना काम है हम सबका, which you are doing, which I am helping, is that अगर सब जाने की एस्थमा इज कॉमन, 10% बच्चों को होता है, इसके लिए इलाज है. आजकल schools इतने, you know what has really improved are the schools. Schools have become so inclusive. Teachers have become so good that कभी कभी वो भी भेज देते हैं
कि इस बच्चे को घड़ी घड़ी सर्दी खांसी हो रहा है, ये बच्चा खेलता है तो उसको खांसी होती है. So my job is also to educate the teachers. So in one of my videos, you will see the role of the teacher in asthma. So this mother who came to me 3 days back, she says, हमने स्कूल को बताया that he's been diagnosed to have asthma. इसीलिए आज सुबह परमिशन लेके हम आपके पास दिखाने आए. So that principal said कि एक पेपर पे आप लिख देना कि अगर इसको कोई अटैक होता है तो क्या करना चाहिए. So I wrote for him a spacer and a reliever inhaler, and I said, ये class teacher को दे दीजिएगा, separate from his one that you use at home. Teach her how to do it. She said कि ये नर्स को आता होगा. ऐसे नर्स को भी कभी कभी अक्सर सही ट्रीटमेंट टेक्निक नहीं आता, आप उसे सिखा देना क्योंकि बच्चा आपका है. और फिर देखना कुछ schools have really become inclusive and good. I'm really happy the way the new generation educationists or educators are becoming. Yeah, and I would also like to add कि प्लीज ये आपके बच्चे के बारे में सवाल है. आप ये सब मत सोचिए कि समाज बाहर शादी में क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे. नो, योर किड नीड्स इट एंड इट्स, आई मीन, इट्स ओके. लाइक जैसे सर्दी खांसी होती है वैसे है. सो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड डोंट मेक हिम और हर ऑल्सो फील bad about it, you know. Yeah, so I would like to Yes. add that. Yeah. Okay, and अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि any generic food products to avoid, Dr. Barnali? They all ask this question also. Yeah. So I tell them this. Food is made into a culprit. Only 2% of the population has food allergy. And it is not that all children with food allergy have asthma, which can be triggered because of food allergy. But do we ask history of food allergy in all asthmatics? Yes, we ask. Because there are certain food which can cause food allergy, not asthma. And so those may be, egg, tree nuts, ground nuts. Abhi soche ground nut. But in Maharashtra, every gravy has groundnut. बंद कर दिया तो उसको खाने को ही नहीं मिलेगा. Milk and milk products. You see, so there are seafood, fish and seafood. So think of a Bengali household where there is fish every day, Yeah. So, or think of North Indians who believe so much in milk and nuts. So, can we do a blanket treatment of ये नहीं देना वो नहीं देना? No. So what I tell parents, दो चीज आप avoid कीजिए completely. One is artificial food colorants, Yeah. known triggers, and the other is preservatives. Avoid these. Other things, you as parents can tell me that whenever we've given this, our child starts coughing and this lasts for 3-4 days, या हम उसके बाद उसको reliever दे देते हैं तो settle हो जाता है. Then I want to know that could it be one of the food that can do, even dal can do it. So it's just, so you need to take a judicious history then कि हो सकता है. तो मैं parents पे छोड़ देती हूँ कि मुझे बताना. Like I have a very brilliant dentist who has told me that, and it so happens that they came to my clinic on one of the follow-ups when it was my birthday and somebody had got a chocolate cake and it was cut and it was there, and I thought the child would like it, and the father said, ma'am, he's allergic to chocolate. Chocolate is actually a known allergen. So the thing is that, so parents should be told that these can, but please don't avoid till you are 100% sure. कभी कभी कुछ खाने से that is an Yes. oral allergy syndrome, like थोड़ी some irritation in the throat. Yeah. That Yeah. is not going to kind of trigger into an asthma attack. But True. food True. colorants and food preservatives, yes, please avoid.
All right. And also, now following this question quickly, I just thought of asking you, many people also have this misconception कि अगर सर्दी खांसी बच्चे में ज्यादा हो रही है, इसका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कर देते हैं. So, ये डिफरेंस, हाउ टू टैकल दिस डिफरेंस और दिस कंफ्यूजन, ये क्या है? So the thing is that पेरेंट्स अपने आप से जाके कभी सर्जरी नहीं कराते हैं. करेक्ट. अपने बच्चों की सर्जरी कराने के पहले वो बहुतों से ओपिनियन लेते हैं. Now tonsils are adenoids and tonsils are actually part of a tonsillar ring के ऊपर वाले, जो actually lymphoid tissue है, जो कि actually protective है. पर कभी कभी ये इतने सूज जाते हैं that they can cause something called obstructive apnea. तो उसमें इन बच्चों को क्या होता है कि वो छोटे बच्चे भी बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं, इनकी नाइट की स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है और वो दचक जाते हैं. Along with asthma specialist, I'm also a sleep specialist. So obstructive sleep apnea is actually my domain. कभी हम sleep पे बातें करेंगे for awareness. But so today, just because you asked me about adenotonsis, so those children, those who have obstructive sleep apnea, who are snoring, where their sleep is disturbed at night, which is coming into their day-to-day functioning, cognitive functions, कि वो दिन में sleepy या irritable है because वो रात को नहीं सो पाए, or they are ceasing to breathe at night. Do those children need adenoidectomy or adenotonsillectomy? 100%. Otherwise, a normal tonsil, जो कि सब बच्चे में वो बढ़ता है, इस lymphoid tissue, it's protected, but after 7 years वो कम होने लग जाते हैं. So if I see a 5-year-old child with tonsils and they say, पर देखो लाल बड़े बड़े सोचे, I said, खराटे लेता है क्या इसे जब उसको सर्दी होती है, सिर्फ अदरवाइज लेता है क्या, दिन में बहुत ज्यादा सोता है क्या, रात को सांस रुक जाती है क्या? नहीं. ऐसे रुको, फिर देखते हैं कि क्या होता है. So we need to know enough to be able to guide them correctly. Parents जाके नहीं करवाते. They are sometimes just sent to do adenotonsillectomy and they feel चलो हमने ये करवा लिया, अभी तो हमारे बच्चे को सर्दी खांसी होगी ही नहीं. Many times asthmatics have come and they said, हमें बताया गया था that अगर ये निकाल लेंगे तो होगा नहीं. But it was a disease of the airway. It was not a disease of the adenoids and tonsils. So exactly why I asked this question, because people may be guided wrongly sometimes. So please take both the opinions correctly. Yeah. So Dr. Banali, my next question, I think you have covered most of the things. You also shared misconceptions, you have shared what triggers, everything, I think. So anything else that I must have missed asking and you would like to share? No, I think you have covered it very well. My only thing if you want my last final words, if you want me to say that, I would like to say that a lot of time parents are in denial for the accepting the diagnosis of asthma, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये टर्म यूज किए हैं, एलर्जिक कॉफ, सीजनल कॉफ, ब्रोंकाइटिस, reactive airway disease, that is RAD, और hyperreactive airway disease, क्योंकि उनको डर लगता था ये बताने में आपको कि एस्थमा है, क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे. और क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, your child kept suffering and and didn't get right treatment. So there is shouldn't be in denial. You can ask your doctors many questions. The second thing is, there is excellent way of diagnosing asthma beyond the age of 5 years with a test of spirometry. So treatment करवाने के पहले you can ask your doctor that can we do spirometry? Now, and spirometry should ideally be done by a pediatrician who's adept at doing spirometry, because बच्चों में spirometry करवाना
जो टेक्नीशियन करते हैं, compared to a child's doctor doing it, who knows what to expect, there is a lot of difference. 3, Okay. एलर्जी टेस्टिंग्स मत करवाइए और अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए. एंड inhalers are safe medicines. Inhalers are the best medicines for asthma. Inhaled corticosteroids is the mainstay across the world. आप हार्वर्ड में जाएंगी, आप बेस्ट ब्रम्पटन में जाएंगी इन इंग्लैंड, आप हार्वर्ड जाएंगी, treatment would be hoo the same. And now we get everything in India, which we didn't get 35 years back when my son was in England. So today we have it all, and we have lots of doctors who are also skilled and trained in it. So don't deprive your children of treatment. फिर आपका बच्चा स्कूल नहीं मिस करेगा. He will not have the scare of having an attack during exams because stress can trigger. He will be able to play. I have the district, football, hockey captains who were asthmatics. I have state gymnasts who are asthmatics. So they are at par. Do you know that the best, Saurav Ganguly is an asthmatic, Shoaib Akhtar is an asthmatic. Do you know David Beckham is an asthmatic? Do you know Serena Williams is an asthmatic? So with asthma, you can be studied. You know, Amitabh Bachchan is an asthmatic. Do you know Indira Gandhi was an asthmatic? So so the people have reached pinnacle of success. Yeah. So your child is not handicapped, which you think. Your child just has different airways. Help him with the right treatment, and all will be well. Thank you, Dr. Barnali. Such a lovely session, lovely content, important. One of the most important vlogs I have done is this. So, thank you once again for collaborating with me. Thank you for inviting me, and a big thank you to the viewers for watching this. Thank you. Yes, thank you.